students, hope you are safe and healthy. I welcome you in School of Scholar Online for this Google Classroom tutorial 7. Sometime it may happens when you open the Google Classroom, your classroom is empty. Just see, I am clicking on Google Classroom app. As you can see here, my Google Classroom dashboard is completely empty. In this case, many students get confused and they used to call the teachers that they are not getting any classes inside their Google Classroom. But don't get panic. You need to click on 3 horizontal lines given at the top left corner of your device. See, I am clicking here. When you click on here, you can see my active email ID is atulrbondre@gmail.com. Gmail.com means it is my personal mail ID and Google Classroom cannot be opened in personal mail ID, hence my dashboard is empty. Again I am clicking on the same horizontal 3 lines. From the drop down arrow at the top, you can see second account of mine is atul.bondre@mgsnagpur.org. This is my official email account through which I can access Google Classroom. But जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये अभी सेकंड नंबर पे होने के कारण ये मेरे डिवाइस का एक्टिव ईमेल अकाउंट नहीं है. So I need to click on this second option, that is atul.bondre@mgsnagpur.org. And then you can see कि यहाँ पे मेरे subjects दिख रहे हैं. If it is still not visible, you can refresh the screen by dragging it in downward direction. Now again I will click on same 3 lines and you can see my active email ID is atul.bondre@mgsnagpur.org and hence I can see all my subject. So my dear student, you need to make sure that the correct mail ID is selected in your Google Classroom account. In case if you tap on this drop down button and still your MGS Nagpur mail ID is not visible to you, then to make it add, you can click on add another account. Once you click on add another account, you select Google. लेकिन ये स्टेप आपको तभी करना है अगर आपका MGS नागपुर का मेल आईडी आपके गूगल क्लासरूम में अवेलेबल नहीं है और आप उसको ऐड करना चाहते हो. नाउ यू प्रोवाइड स्क्रीन पासवर्ड. Here you need to type your MGS Nagpur mail ID. Currently I am typing demo mail ID of S12 student. Click on next button. Type the password which is provided to you by your class teacher and click on next button. On this resulting screen, click on I agree. It is configuring my MGS ID in my mobile. Now you can see there are total 3 IDs in my mobile. The first one is atul.bondre@mgsnagpur.org. It is at the top, means this mail ID is currently active in my mobile, and through this mail ID I can see 3 subjects under this mail ID. Again if I click on those 3 lines and if I select s12@mgsnagpur.org, then in that case it will show me the subject of S12 student. Similarly, if I click on my Gmail, then it will show the blank screen. What does it means? इसका मतलब ये हुआ कि अगर गलती से आपने आपका पर्सनल मेल आईडी एक्टिव करके रखा है तो आपको गूगल क्लासरूम में कुछ भी विजिबल नहीं रहेगा. तो यहाँ से ये ड्रॉप डाउन एरो से आपको एक बात श्योर कर लेनी चाहिए कि व्हाट करेक्ट मेल आईडी you have given. If you give your proper mail ID,
then definitely it will show you the subjects which are under your Google Classroom dashboard. Similarly, one more important thing is that same type of setting is available in Google Meet app. So अभी मैं आपको Google Meet ऐप के बारे में भी यही इम्पोर्टेंट चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ. You can see on my screen in the 5th row there is one app called Meet. So I am clicking on this app. Now you can see in this app there are 3 lines at the top. I am clicking on those 3 horizontal lines giving at the top left corner. Here you can see again here my wrong mail ID is selected, that is atulrbondre@gmail.com. Through this Gmail ID I cannot access my Google Meet. So you need to click on drop down option. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा atul.bondre@mgsnagpur.org is my correct official mail ID. So I need to tap on this ID. Now again I will click on those 3 buttons or 3 horizontal lines, and you can see now my correct mail ID is displayed here, atul.bondre@mgsnagpur.org. In this way you need to make sure that your Google Classroom as well as Google Meet ये दोनों ऐप सही तरीके से mgsnagpur.org इस आईडी से लॉगिन होना कंपलसरी है. देन ओनली यू कैन अटेंड द पीरियड. नाउ हाउ टू अटेंड द पीरियड? नाउ जब आपने एश्योर्ड कर लिया है कि आपके गूगल क्लासरूम में प्रॉपर मेल आईडी सिलेक्ट है mgsnagpur.org एज वेल एज आपके गूगल मीट में भी प्रॉपर आईडी सिलेक्ट है, तो आप गूगल क्लासरूम में जा सकते हैं. आपका जो भी पर्टिकुलर पीरियड होगा उसके ऊपर आप टैप करिए. अभी ये पीरियड एक्टिव नहीं है, अदरवाइज आपको ये जो ऊपर आई का सिंबल दिख रहा है टॉप में, उसके बाजू में एक कैमरा का सिंबल दिखेगा. यू टैप ऑन दैट कैमरा सिंबल. वो कैमरा का सिंबल तभी विजिबल रहेगा जब आपका पीरियड शुरू होने जा रहा है, उसके 1 या 2 मिनट पहले वो विजिबल होगा. तो ये जो आई का साइन एट द टॉप राइट साइड में है, उसके बाजू में एक कैमरा का सिंबल आएगा, वहाँ टैप करने के बाद आप पीरियड ज्वाइन कर सकते हो. सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका गूगल क्लासरूम और गूगल मीट ये दोनों ऐप mgsnagpur.org मेल आईडी से लॉगिन होना ज़रूरी है. अगर वो लॉगिन नहीं है तो किस तरह से आप उसको प्रॉपरली लॉगिन कर सकते हैं, दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन दिस वीडियो. थैंक यू पेरेंट्स.